So first of all, I welcome to you, madam, for the virtual platform. I welcome the chief organizer of the series, Honorable Principal M. Bechkar, sir. I welcome the colleagues from my college and all those dear participants. The topic for today's presentation is POSH Act. Now this topic is going to present, as I have mentioned, Advocate Krithika, madam. Ma'am, let me focus upon her qualification. Madam have completed B.B.A.LL.B and also LL.M in criminal law and business law. Also, Madam have PDGCJ at Indian Institute of Industrial and Professional Studies. So, with this brief introduction, now I request you, Madam, please start your presentation on the topic POSH Act. You are most welcome. Thank you so much, Prashant sir, for the introduction. Let me, okay. So let me. I hope I am properly audible. Yes, madam. Yes. Am I audible? Okay. Yeah. Thank you for the confirmation, sir. Yeah. Thank you for the confirmation. So, as Prashant sir has introduced, my name is Advocate Krithika, and I'm currently associated with the Indian Institute of Industrial and Professional Studies. POSH Act, like what it is and what does it do. So here, in this span of 1 hour, I'll be speaking about what is POSH Act and why do we require it. Next, followed by, there is a general myth that this is very much female-oriented, males do not have protection, etc., etc. So I'm going to burst all those myths, followed by conclusions. So if you have any questions, you can ask me. To start with, let us first understand the concept of sex and gender. This is very important because only once we clear this understanding, like what is sex and what is gender, only then we'll be able to understand the POSH Act. See, sex is something that we have got biologically. That is something decided at the time of our birth, that this is a boy child or this is a girl child. Wherein gender is something that is evolved at a later stage. That is because of the hormones, that is because of our mental status, that is because of our preferences. That is something, an acquired identity. So here what prevails is not the biologically assigned sex, but the acquired identity gender. Now, if you see the entire POSH Act, it doesn't speak about the word sex. It uses the term gender, which means that this is not just applicable on the females who are assigned that sex during the time of birth, but also on the other people who have acquired it, like some transgender or some converted people, queer. This is applicable on them also. So apart from the gender male, this is applicable almost on all other genders. Okay, so that is why this act plays a very specific role, and it covers the shortcomings that we have either in IPC or IT Act or any other act for that manner. Now, moving to this Protection of Women from Sexual Harassment Act, let me tell you the brief history of it. All of us here, I think, would know that this is based on the case that was filed, that is Vishaka versus State of Rajasthan. So what happened in Vishaka versus Rajasthan? What made that women association to knock the door of Supreme Court? That is from the incident of Banwari Lal Devi. She was working as a self-help group like this Anganwadi Kendras and others. What we have, the similar kind of thing we have in Rajasthan too. So she was working there for the welfare of children and women.
Now, what happens is the sarpanch of that village, he was getting his daughter married, who was like 3 year old. That infant, I could tell, that child's infant's marriage was fixed. Banwari Lal Devi, she executing her duty, she went to that Sarpanch's home and she stopped that marriage. She said that this is violation of law and this cannot happen. Aggrieved by this incident, what happened is that Sarpanch of that village, along with his children, his niece and his nephews, and again with his brother's sons, along with that, I think around 15-20 people, they went to Banwari Lal Devi's home. They tied her husband up in a place in a chair with rope or something like that, and then she was gang raped by all of them, like around 15-20 people in front of her husband. And also she was made to walk naked, like a naked parade was done of hers that was claimed to be done in the village roads, and she was severely assaulted. Aggrieved by this incident, Banwari Lal Devi, she did not lose hope. She immediately went to the jurisdictional police station and she said that this is what has happened to me and my husband and we need justice. That fellow was Sarpanch, so obviously he would have he has power on that police officers. So what did the police officer do was they said that you leave your petticoat here. We need it as an evidence. So again, further, she was assaulted in the police station, telling that we want your clothes, we want that, we want this. And she was asked many, many weird questions. And after that, her FIR was not filed. Later, that lady, a very thick-skinned and very empowering lady, she went to magistrate court. She filed a private complaint. She did struggle a lot. And in the magistrate court, it was the judgment. You will not believe. The judgment was that all the accused who were all there, like around 13 people whose name Banwari Lal Devi has given, though there was an eyewitness, that is her own husband, all of them were released. It was the judge at that point of time, he stated that it is very difficult for a father or for a son to have to indulge in a act like gang rape in together, because there were like father was also there, son was also there, and nephew was also there, so and brothers were there. So that was a family act. So a family cannot indulge in such activity. That was the lame reason given by the honorable judge by that time. And this judgment caused a lot of noise, and this resulted in the formation of an association called as Vishaka. So Vishaka is not a human being or not a person as such. It is a amalgamate of women association that have come together stating that we want justice. And if this has happened with Banwari Lal Devi and all of the accused are released, this may happen with us also. That is when they knocked the doors of Supreme Court. And Supreme Court, it asked the government to give the report and all other things, but still it was not done, and Supreme Court took cognizance of it, and it said that, yeah, let us form guidelines, and it directed the central government that it has to bring an act, and it drafted certain guidelines, very famously called as Vishaka Guidelines, in the year 1992. And speaking of Banwari Lal Devi's case, even for today, she has not got justice. All the accused who were involved in that gang rape case are discharged from all the charges and they are roaming free. There was that lacuna in law that did not give her justice. Even today, she doesn't have that thing. And you know how difficult it would have been for her, thinking that the people are roaming free, and she's suffering even for today. So moving further, in the year 1992, Vishaka Guidelines was formed. The irony is that after 18 years, that is in the year like more than 18 years, after decades, I think we got this Protection of Women from Sexual Harassment Act in the year 2013. It was only then the government took the real
gravity of it, it understood, and then it passed that specific legislation. So this is all about the very disheartening history that we have regarding this POSH Act. Followed by, what is the need of this particular act? You may ask me, we have clauses of rape or sexual assault or molestation in IPC. We have in the recent IT Act too, though it came later. What was the need of having this specific legislation? So this specific legislation, it draws a line in the scope. That is, it has to happen in the workplace with your colleagues. So it is very specific. It is not in the general thing that you can go and sue anyone for that. Now, IPC, IT Act and all, you can go and sue anyone. You need not to be related to them. Wherein POSH Act is very specific that it has to be colleagues. You should be working together. And Internal Complaints Committee is just a part of this POSH Act. It is not the only thing that we have there. Now, if you read it, section 18, it speaks of the duties of the employer, like what he has to do. Okay, like he has to conduct activities wherein he is informing the people about the general rules that is there, and he should be educating them. He should put posters, there should be reports that has to be submitted, so that the women are in the safe hands. They also feel that yes, we are in the safe hand. And also the males who send these females to or their sisters, wives, whoever it is, to a workplace, even they feel that yes, our family member or our girl is safe in such a place. So that is the major objective of this particular POSH Act. It's not just about filing a complaint of the sexual harassment, but it is more than that. Now, followed by the most important thing that we stuck is, what is sexual harassment as per the POSH Act? As per POSH Act, a sexual harassment need not to be an physical act. It can be a verbal act. It can be a non-verbal act. It can be actions. It can be online. Whatsoever matter. Now, suppose I am sitting here and there is someone who's sitting in front of me, and that person is watching some objectionable videos, or he's or watching some objectionable photos, or he's making some comments, some lame comments. Even that is amounted as a sexual act of sexual harassment. So I can file a complaint against him for doing such acts and making me uncomfortable. And even the comment that he passes on my physical appearance or my day-to-day activity, like, oh, you are like, see, giving compliment in a good way is a different thing, wherein giving compliment with a sexually colored remark is a different thing. So if somebody is making constantly such comments, such lame comments, then that act falls under the definition of sexual harassment. It can be direct and it can be indirect also. Like need not to be like that person has to come and tell me directly. Okay, he can go and tell to somebody else, and somebody else would have come and told me that, see, that person is making such a comment on you. Even that amounts to sexual harassment. So the definition of sexual harassment is very, 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 very wide. It is like it covers each and everything. So you cannot tell that this is not falling under the scope of the sexual harassment. So it is very vast. Now, next, where the sexual harassment has to happen and when the sexual harassment has to happen. Now, the question where it has to be during the course of employment. Now, for example, let me give you an example wherein there are two colleagues and that person was going in the cab together, and now the sexual harassment has taken place. Will that be covered under POSH Act? Yes, that will be covered under the POSH Act. That is because they are finishing their duty and they are going back to their home. So that is when the sexual harassment has taken place. Now, one more question. There were two colleagues, and they are related to each other also. They met in a function somewhere else, some marriage function, some common friends, relative, whatsoever matter. Now, there that male sexually harasses the female. Will this be covered under the POSH Act? As of now,
as per the existing law, the answer for this is no. However, this question is open in the Honorable Supreme Court of India, wherein this case was filed by a student against the dean of a university. The student claimed that the dean of that university, she was happened to be her some common friends and some common friends relate to something, and they met in a function, and over there the dean misbehaved with her and touched her inappropriately. And because of this, she filed a complaint in the ICC of the school, and it was said that it is not coming under this purview. And however, she tried to register the FIR also, that was also not possible. That's when they approached the Honorable Supreme Court, stating that this comes under the POSH Act and hearing is going on. So the judgment, when it is passed, would definitely become a landmark judgment, and we can get answers for this. Now, are lesbian encounters counted under POSH Act? I would like to know if anyone wants, because I don't want to do monotonous and I speak. So if anyone has any answers, please do comment so that I will also get to know that what's your understanding regarding this. Are lesbian encounters are involved in are coming under the purview of POSH Act? That is a woman sexually harassing another woman. So can they file a complaint in internal complaints committee? So that's my question. So please do let me know in the comment section, and I'll be answering this question in the last part, so that last part, so that there will be some scope for some discussion. And moving next to the next topic. So yeah, I think somebody unmuted themselves. Okay, yeah, thank you. Yeah, so moving next, we have two So now, internal complaints committee. This committee shall be constituted by an organization or by a company or a legal entity which is having more than 10 or more than 10 employees. And now you can tell me that there is a tentative situation wherein there is a company. It is having its branch office in New Delhi. There are 5 employees. And in Bangalore, there are 5 employees. So should they form an ICC? The answer is yes. They should form an ICC, because even though they are branch offices and they are operating differently, together they are forming one legal entity. Henceforth, they are under the purview of the POSH Act, and they should be constituting an internal complaints committee. Now, what shall the internal complaints committee have? Internal complaints committee will have a presiding officer who shall be a woman. Now, if you ask me that, oh, we don't have any women in our company, unfortunately, we don't have, only women that we have is a sweeper who comes and who cleans. Apart from that, we don't have any women. What to do? In that circumstances, if that person who comes to mop, clean and all, if you feel that, yes, she has little knowledge and she can at least read and write, then she also can be the presiding officer. There is nothing in the POSH Act that only this person has to be there. Usually, it is a senior most women employee who will be the presiding officer. But provided if that person refuses, or if there is no such woman, then even these people can be the presiding officer. Followed by members, which will be more than 2. And then there will be one external member. External member is a person who is not an employee of your company. That is, who will be working outside your company. That is a practicing advocate. Usually it happens like that. They would be all, if you see most of the internal complaints committee, they will have a practicing female advocate as a member of the internal complaints committee, so that it is easier for them. And she would be knowing all the laws, and it will be flexible to them. And so, and one more thing is, it has to be like minimum 50% of them should be women. That is, the other 50% you are at discretion to have men in the committee. The only criteria, the only gender specific position here is the presiding officer.
Okay, so the presiding officer has to be compulsorily a woman. This is because that person should be able to communicate, like the complainant has to be free mind. Like not all women will be very much open to speak about the things that she has gone through with a male. So it has to be compulsorily a female so that she can talk and she can take call on the same. The next one we have is local complaints committee. So local complaints committee is wherein it will be headed by the district magistrate. Now, if you don't have more than 10 employees, then in those cases, the complaint will be given to the local complaints committee headed by district magistrate. So even there will be external committee members, there the DM and the district judge, they would appoint certain committee members and they would sit, they will do the hearing, they will pass the orders. Now, under what circumstances the complaint will go to local committee? The first one is, as I said, like there is a housekeeping maid. Okay, so where will the maid go? If she faces a sexual harassment, she doesn't want to file an FIR. She has a discretion, she can do that, but still, if she opts for POSH, हाँ ठीक है सर बिल्कुल हाँ श्योर So in those cases wherein if the female is if that is a maid, तो वो कंप्लेंट कहाँ फाइल करेंगे? तो उनके पास कंप्लेंट फाइल करने के लिए जगह भी होनी चाहिए. तो उस सिचुएशन पर वो जाके लोकल कंप्लेंट कमेटी पर कंप्लेंट कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को, डीएम को, और वो उसका कॉग्निसेंस लेंगे. दे विल टेक द कॉग्निसेंस एंड दे विल डू द इंक्वायरी. उसके बाद वो कोर्ट में सबमिट करेंगे इस रिपोर्ट को कि ऐसा ऐसा हुआ था. ठीक है, उसके बाद कोर्ट एक और बार अपना हियरिंग वगैरह करेगा. उसके बाद सजा जो भी है वो सुनवा दिया जाएगा. द ग्रेटेस्ट केस लॉ दैट वी हैव हियर इज शाइनी आहूजा केस. आई एम श्योर हम सबको शाइनी आहूजा पता ही होगा. गैंगस्टर मूवी में कंगना के ऑपोजिट उन्होंने किया था. बॉलीवुड के बहुत बड़े स्टार थे वो उस जमाने के. उनके डोमेस्टिक हेल्प जो है, यानी उनके मेड जो है, उन्होंने उनके अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट का कंप्लेंट करा था लोकल कंप्लेंट्स कमेटी पर. उसके बाद उसका ट्रायल वगैरह हुआ जहां पर उन्होंने प्रूफ कर दिया कि हाँ शाइनी आहूजा ने उनको सेक्सुअली हैरेस करा था. और उसके बाद लोकल कंप्लेंट्स कमेटी ने कोर्ट में भी सारे एविडेंस वगैरह पेश किया और कोर्ट ने शाइनी आहूजा को 7 साल की सजा सुनाई गई. Okay, so he was awarded with 7 years of imprisonment. I think हाल ही में उनका 7 साल का कुछ complete हुआ है. Now I think he is out on bail, or I'm not sure. I'm sure he is out, but I'm not sure if it is 7 years or he's on parole or bail something. तो अभी वो फिलहाल तो बाहर है, लेकिन उनके अगेंस्ट वो हुआ था. तो you understand the proximity that we have in this case कि कितना वेटेज देता है ये कि एक मेड भी जाके अपने अगेंस्ट हो रहे सेक्सुअल हैरेसमेंट को वॉइस आउट कर सकती है. एक एफआईआर दर्ज कराना कितना मुश्किल है और उसमें उस प्रोसेस से थ्रू पास करना कितना मुश्किल है, हम सबको पता है. इसीलिए ये जो पॉश एक्ट है ये हमें फैसिलिटेट करता है टू टेक एक्शंस, टू वॉइस आउट फॉर आवरसेल्फ, इरेस्पेक्टिव ऑफ हम जो भी हो, हमारा दर्जा वहां पर कुछ भी हो, कैसा भी हो. जरूरी नहीं है कि हमें सब पता होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, बट we can stand out for ourselves and it has made it an easy go. And the next one is, ठीक है, हमने ये समझ लिया कि कंप्लेंट अथॉरिटी कौन सी होती है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन सी होती है, लेकिन ये प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर ये होता है कि द कंप्लेनेंट जो भी है उनको एक रिटर्न कंप्लेंट देना है प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, या फिर जो भी इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी में है उनको एक रिटर्न, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, उनको एक रिटर्न कंप्लेंट देना है. वर्बल कंप्लेंट एंटरटेन नहीं होगा. यू हैव टू गिव अ रिटर्न कंप्लेंट. रिटर्न कंप्लेंट देने के बाद वो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी का, वो लोग पहले बैठेंगे एक बारी कि कंप्लेंट देखेंगे क्या है क्या नहीं है, कितना सच है इसमें, कितना झूठ है, अपना एक ड्यू डिलिजेंस करेंगे. उसके बाद 1 वीक के अंदर वो लोग दूसरे पार्टी को नोटिस देंगे दैट a complaint has been registered against you, so you have to appear before the complaints committee to do the hearings.
And also, there is a limitation period for the female who is filing the complaint. That is, she has to file the complaint within 3 months of the Sexual Harassment Act that has taken. मान लीजिए अगर 1st of November को ये हुआ है, then within 3 months, that is within 90 days, उनको वो complaint file करनी है. अगर उस टाइम के अंदर वो कंप्लेंट फाइल नहीं कर पाए, देन दे हैव टू रिक्वेस्ट फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले. वहां पर उनको ये रीजन बताना पड़ेगा कि उन्होंने 90 डेज के अंदर कंप्लेंट फाइल क्यों नहीं किया. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्यों नहीं किया उन्होंने, उनको क्या किस चीज की उन्हें प्रॉब्लम थी, या उनको कोई किसी ने डराया था, क्या नहीं था. एंड दैट इज एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कंप्लेंट्स कमिटी to take the complaint or not to take the complaint. ठीक है, तो that is up to them, totally up to them. उसको कोई challenge नहीं कर सकता कि उनको वो reason valid लगना चाहिए, उनको वो reason सही लगना चाहिए. Only then they will take it. And after that, the complaints committee will do the hearing. And सारा hearing recorded होगी. Either they will do the video recording or they will do the audio recording. सारा reporting होगा, everything will be done, and it has to be done within 90 days. Again 3 months का कुछ time है, and उसके अंदर उनको वो report करके उनको submit करना है. Okay, so if that person is found guilty, then he will be punished accordingly. So that and that punishment, if it is a little less gravity, then the punishment can be of transfer. कि अगर उनके पास 2 ब्रांच है, तो आप एक दूसरे को ट्रांसफर कर दो कि ठीक है, आप दोनों साथ में काम ही मत करो, आप उस ब्रांच में जाओ, आप उस ब्रांच में जाओ. ठीक है, यू कैन ट्रांसफर. एंड ऑल्सो द ट्रांसफर कैन बी फॉर द फीमेल ऑल्सो एंड फॉर द मेल ऑल्सो. दोनों के लिए भी हो सकता है. जरूरी नहीं है कि मेल को ही ट्रांसफर करे, फीमेल को भी ट्रांसफर कर सकते हैं. So this is up to the discretion. Like if the female is okay with the transfer and if she asks for it कि मुझे ट्रांसफर कर दो, then that's well and good. There is nothing stopping ICC from doing it. And ये temporary suspension भी हो सकता है, ये termination भी हो सकता है, and ये demotion भी हो सकता है, ये transfer of department भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. It can be anything which the internal complaints committee or the local complaints committee may deem fit. And also one more thing I forgot to tell in local complaints committees, if you are filing a complaint of sexual harassment against your employer, कि आपके कंपनी के जो है वो मालिक के अगेंस्ट, या फिर आपके कंपनी में बहुत ऊंची पोजीशन में हो, मान लो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हो या फिर वाइस चांसलर हो, रजिस्ट्रार हो, किसी के ऊपर आप कर रहे हो, उस टाइम पर आपको लोकल कंप्लेंट्स कमेटी में करना है कंप्लेंट. आप उसके लिए रीजन ये बताया गया है कि इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी का जो मेंबर है वो उनके नीचे काम करते हैं. सो उनका जो डिसीजन मेकिंग होगा ना, वो उसमें इम्पैक्ट करेगा. अरे हम मालिक के खिलाफ सुन रहे हैं, वो होगा ना. सो द लॉ बिलीव्स दैट विल नॉट बी करेक्ट एंड देयर विल बी सम पार्शियल इन दिस. सो दे हैव सजेस्टेड दैट यू गो एंड फाइल द कंप्लेंट्स इन द लोकल कंप्लेंट्स कमेटी. So local complaints committee का भी यही timeline रहेगा. Within 3 months, it has to do all the hearing and it has to pass the orders. और उसके बाद local complaints committee के पास ये भी right है कि मान लो अगर आपके पास internal complaints committee है भी, फिर भी local complaints committee जो proceeding चल रहा है उसमें वो आके देख सकते हैं कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं. वो आपसे report पूछ सकते हैं. Okay, now if I am owning a company and मेरे पास 10 से ज्यादा लोग हैं, then I have to give a report to local complaints committee कि मेरे कंपनी में इतने sexual harassment के cases हुए हैं, मैंने इस एक्शन लिया है, मैंने ये करा है, मैंने वो करा है, पूरा मुझे डिटेल देना है. मुझे उनको ये भी बोलना है कि मैंने अपने एम्प्लॉयज को सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए कि मैंने क्या क्या एक्शन लिया है. मान लीजिए मैंने एक वेबिनार कंडक्ट किया है, मैंने कुछ रिसोर्स पर्सन को बुलाया था, मैंने होर्डिंग्स लगाए थे, मैंने स्टिकर्स चिपकाए थे. अगर आप गवर्नमेंट ऑफिसेस में जाएंगे तो आप वहां पर बहुत सारे ये स्टिकर्स चिपकाए हुए देखेंगे कि रेस्पेक्ट वुमेन, सेक्सुअल हैरेसमेंट इज अ पनिशेबल ऑफेंस. आपको ये चीज बैंक में भी दिखने को मिलेगा. दैट इज देयर फॉर अ रीजन.
सिर्फ वहां पर जगह है, अच्छा है पोस्टर करके नहीं चिपकाया है उन्होंने. दैट इज बिकॉज दे हैव टू बी कंप्लेनेंट विद द लॉस. अगर मान लीजिए कि इंटरनल लोकल कंप्लेंट्स कमिटी में कभी भी डीएम इंस्पेक्शन के लिए आ जाएंगे, अगर उन्होंने ये ऑब्जेक्शन पुट करा कि आपके यहाँ ना कोई पोस्टर्स है, ना आपने कुछ इवेंट किया है, देन दे कैन टेक एक्शन अगेंस्ट यू, telling that you have not done anything. So they can impose fine or they can tell that you have to do this. उनके पास वो सारे rights है. They have all the rights. So और अगर किसी एम्प्लॉय ने भी डीएम को कंप्लेंट करा इस एनैक्टमेंट के अकॉर्डिंगली कि हमारे यहाँ तो सेक्शन 18 सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, then even then DM can take actions. So it is very important for an employer, चाहे वो 10 एम्प्लॉय वाला कंपनी हो या 100 एम्प्लॉय वाला कंपनी हो या 1000 एम्प्लॉय वाला कंपनी हो, they have to be compliant with the POSH Act. अगर नहीं रहेंगे then it is very difficult for them. And also there is no exception. आप ये नहीं बोल सकते हो कि हमारे कंपनी में कोई भी फीमेल एम्प्लॉय ही नहीं है, हमारे कंपनी में झाड़ू पोछा करने के लिए भी मेल आता है, चाय बनाने के लिए भी मेल आता है, हमारा नो फीमेल जोन है इसीलिए हम आईसीसी नहीं रखेंगे. नो, दैट इज अ बिग नो. अगर आपके पास सिर्फ मेल्स ही है फिर भी आपको एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी रखना ही रखना है और आपको हर साल एक रिपोर्ट सबमिट करना ही करना है. That is very much essential. अगर फीमेल्स भी हो, अगर कोई सेक्सुअल असॉल्ट हरासमेंट का कंप्लेन नहीं हुआ है, even then you have to submit a report telling that there was 0 complaints. This is to understand that yes, आपकी जो कंपनी है वो लॉ को फॉलो कर रही है. अगर नहीं कर रही है then again it will be a hurdle to you and उसके लिए they can impose fine, they can take sumo complaint भी register कर सकते हैं. तो आपको वहां पर ये बताना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या है क्या नहीं है, आपने किस वजह से नहीं किया है. So you have to give a lot of explanation and that is very 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 difficult. And instead of that it is very easy to submit a report. आपको वो जो रिपोर्ट का फॉर्मेट है वो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा या फिर आपको बहुत सारे पॉश के वेबसाइट्स है, गवर्नमेंट का बहुत सारे वेबसाइट्स है, इवन देयर यू कैन गेट इट. And also it is very important to imbibe this POSH thing in your HR policies. तो आपकी कंपनी में जो भी HR policies होगा आपको उसमें ये POSH एक्ट का डालना ही पड़ेगा. ओके, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर वो भी नहीं रहेगा ना कि आपका जो डीएम है, जो लोकल कंप्लेंट्स कमिटी है, दे हैव द राइट टू इंस्पेक्ट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, क्या वो कंप्लेंट में है या नहीं है, एंड आपके पास लोकल कंप्लेंट्स कमिटी मिल रही है नहीं मिल रही है, क्या है, अगर आपने कोई सेटलमेंट किया है, आपने कैसे किया है. कुछ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि मान लीजिए कि किसी ने सेक्सुअल हैरेसमेंट कर दिया तो उनको टर्मिनेट कर देते हैं, अरे अब बाबा हमें चाहिए ही नहीं, पूरा क्यों इतना प्रॉब्लम ले, ये करें वो करें. सो दैट इवन दैट शुड नॉट बी देयर एंड दैट शुड नॉट बी प्रैक्टिस्ड. इवन अगेंस्ट दिस द फीमेल कैन गिव अ कंप्लेंट. एंड इसके बाद अगर कंप्लेनेंट को जो फीमेल है, if she is not happy with the report that is given by the ICC or LCC, she can go on appeal and she can challenge that in the honorable jurisdiction wise court. कौन सा कोर्ट आता है उसके अकॉर्डिंगली जाके आप उसको अपील कर सकते हैं. नाउ अभी मैंने बोला कि फीमेल कंप्लेंट दे सकती है. कौन सी फीमेल कंप्लेंट दे सकती है? शी मे बी एन इंटर्न, शी मे बी अ स्टूडेंट, शी मे बी अ कंसल्टेंट, she may be a part-time worker, she may be a substitute, कुछ भी हो सकता है, anything. She should be there in your workplace. बस, that is all it is required. And next, the female who has gone through the sexual harassment, she herself should give the complaint. For example, I have a very good friend of mine. She is facing sexual harassment, but she doesn't want to give the complaint. Can I give complaint on behalf of her? That's a big no. I cannot give complaint on behalf of her. She herself has to go and give the complaint. I can bring it to the knowledge of the internal complaints committee कि ऐसा कुछ हो रहा है. After that, if the internal complaint committee want to go ahead with the proceedings, then they require that female's complaint. That is very much essential.
Now, the major question what whenever I speak about POSH, everybody asks me is there is a lot of misuse of this act. बहुत सारी फीमेल्स ऐसे होती है, मान लो कंसेंशुअल रिलेशनशिप में रहते हैं, उनका कुछ रिलेशनशिप ऑलरेडी होता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, मान लीजिए उसका मैनेजर हो, कोई भी हो, वो प्रमोशन देने से मना कर देता है या फिर उसको कुछ डिमोशन कर देता है या जितना एक्सपेक्टेशन था उतना सैलरी हाइक नहीं देता या उनके आपस के बीच में झगड़ा हो गया, कुछ भी हो गया, एनी रीजन फॉर दैट मैटर, इमीडिएटली वो क्या करते हैं, वो सेक्सुअल हैरेसमेंट का कंप्लेंट फाइल करते हैं. इसमें लड़के पिसते हैं एंड मेन सफर. व्हाट इज देयर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मेन? बहुत कुछ है. देयर इज अ लॉट. If you are having an assumption or if you are feeling a preemption that शायद ऐसा हो सकता है मेरे साथ, then you can give a complaint to grievance redressal cell. I'm sure wherever ICC is there, there will be the grievance redressal cell also. So men जाके, मेल्स जाके वहां पर कंप्लेंट दे सकते हैं in the grievance redressal cell. You cannot complaint in the internal complaints committee, क्योंकि internal complaints committee में सिर्फ और सिर्फ कंप्लेनेंट जो होगी वो फीमेल हो सकती है, मेल कंप्लेनेंट नहीं हो सकता. तो आपका कंप्लेंट जो है वो जाएगा ग्रीवियंस रिड्रेसल सेल पे. आपको वहां पर कंप्लेंट देना है कि शायद मेरे ऊपर ऐसा एलिगेशन आ सकता है, शायद ऐसा कंप्लेन आ सकता है, या फिर अगर कोई फीमेल आपको सेक्सुअली हरास कर रही है. सी, the time has changed a lot, so a man can be sexually harassed from female. So in that circumstance also you can go and complain to grievance redressal cell. So grievance redressal cell क्या है? Internal complaints committee की तरह ही it will do the hearing and it will pass the appropriate orders की termination है, क्या नहीं है. So the orders will be passed according to that. So there is nothing to state that men do not have any protection or this is very gender specific thing, etc. Even males के लिए भी है. एंड उसके बाद अगर मान लीजिए किसी फीमेल ने किसी मेल के अगेंस्ट फॉल्स एलिगेशंस लगा दिया, कंप्लेंट कर दी आईसीसी में, और उसके बाद हियरिंग भी हो गया एंड आप क्लीन चिट लेके आ गए, ठीक है, उस सिचुएशन पर आप फीमेल के अगेंस्ट डिफेमेशन केस फाइल कर सकते हैं. आप चाहिए तो आप एफआईआर भी रजिस्टर कर सकते हैं, यू कैन गो थ्रू दैट वे, या फिर आप प्राइवेट कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हैं मैजिस्ट्रेट के साथ, जो डायरेक्टली आपका डिफेमेशन ट्रायल है वो वहां पर स्टार्ट हो जाएगा. So you are entitled to claim damages from that female for falsely accusing you for the sexual harassment that which you have not done. ठीक है. एंड वन मोर थिंग इज लाइक, शुड यू वेट टिल द ट्रायल पीरियड इज डन कि आईसीसी अपना आंसर दे, ये दे वो दे, क्या हमें उतने टाइम तक वेट करना है? जी बिल्कुल, आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप क्लीन हो, आपने कुछ ऐसा कांड किया नहीं है करके उनका रिपोर्ट होना चाहिए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड नाउ वन मोर थिंग यू can ask me from the male perspective that मान लीजिए मैंने being a male मैंने कुछ नहीं किया है, even then ICC has given a report in favor of that female, then what is the option that I have? Even you can file an appeal before the competent jurisdiction court. Even उसमें complainant सिर्फ female हो सकती है, लेकिन जो अपेलेंट होगा या जो अपील करेगा वो मेल भी हो सकता है. एक मेल भी जाके अपील कर सकता है कोर्ट में, जी देखिए मैंने बिल्कुल कुछ नहीं किया है, ये फीमेल ने ऐसा दिया था और आईसीसी कमिटी का फाइंडिंग गलत है. Okay, so you can do that one also. So even there you have that option. ऐसा नहीं है कि मेल्स को पूरा ये लॉ एक्सप्लॉइट करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. Even males have adequate right as that of the females. बट यहाँ पर सिर्फ एक है कि पॉश इज वेरी स्पेसिफिक. सिर्फ एक चीज में वो जो कंप्लेनेंट होगी वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल ही होगी. उसके अलावा हर जगह पर वो मेल्स को भी और फीमेल्स को दोनों को इक्वल राइट दे रही है.
ठीक है. It is not segregating male and females, or it is not telling that women are this one. It is not a feminist law. It is an equalist law जो equality provide करता है. क्योंकि अगर आप एक ट्रेडिशनल वे में देखा जाए कि आजकल लड़कियां चाहे चांद पर भी चली गई हो या उसके बाहर भी चले जाएं, even then it is not okay for a female to come out and speak vocally that she is being going through a phase of sexual harassment. The reason for that is उसको ये भी लगता है कि सोसाइटी मुझे जज करेगा और घर में पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे. घर में अगर बहुत सारी लेडीज ऐसी होती है जो ये सोचती है कि अगर मैंने वॉइस आउट कर दिया तो मेरे घर वाले मुझे काम पर जाने से मना कर देंगे, मुझे काम पर जाने नहीं देंगे, या मुझे कहीं बाहर घूमने जाने नहीं देंगे. ये बोलेंगे कि ऐसा होता है वैसा होता है. सो एक मेरा आगे पीछे एक लिमिटेशन बन जाएगा, एक रिस्ट्रिक्शन बन जाएगा. तो उसके लिए मैं ना ही बोलूं तो ही बढ़िया है. सो on all these factors they don't come out of that. So इसीलिए to just to facilitate and just to break the ice they have formed this internal complaints committee. क्योंकि वहां पर जो presiding officer होगी that will be the female who's working in that organization. So obviously थोड़ी सी जान पहचान होगी and उनको भी पता होगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. So it will be easier for them to pass the judgment. So that is the only rationale or reason behind this particular enactment, to have specifically women as the complainant. So I had asked a question earlier. मैंने पूछा था क्या female के against complaint दे सकती है? Yes. Lesbian encounters are considered as sexual harassment and complaints can be given under the POSH Act. POSH Act क्या, ये मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट है जहां पर एक कंपनी में एक लेडी ने दूसरी लेडी के ऊपर इल्जाम लगाया था कि वो मुझे सेक्सुअली हैरास कर रही है. शी इज अ लेस्बियन एंड शी इज सेक्सुअली हैरासिंग मी. एंड उन्होंने उस कंप्लेंट में कॉल आउट भी किया था कि आई डोंट हैव प्रॉब्लम विद हर sexuality, but my problem is she is sexually harassing me, which is making me uncomfortable. तो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी ने उनकी कंप्लेंट को रिजेक्ट कर दिया ये बोल के कि द कंप्लेंट हैज टू बी अगेंस्ट अ मेल. अगर एक मेल के अगेंस्ट वो कंप्लेंट नहीं है तो हम वो कंप्लेंट को एंटरटेन नहीं कर सकते. Then she challenged that in the Madras High Court. तो मद्रास हाई कोर्ट ने ये बोला कि the legislation has very clearly stated that the complainant will be female, but it has never stated that the accused will be men. तो पूरे पॉश एक्ट में कहीं भी नहीं लिखा है कि accused has to be men. It is only stating complainant is female. So in that cases we can give that room and we can tell that ठीक है accused female भी हो सकती है. तो मद्रास हाई कोर्ट ने क्या किया, वो जो आईसीसी कमेटी का रिपोर्ट था उसको उसने क्वैश कर दिया और रिवर्स कर दिया रिपोर्ट को, और इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी को डायरेक्शंस दे दिया टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द केस, और ये ट्रायल उन्होंने कंडक्ट करने के लिए बोला. So from that judgment we have a locus standi that yes, even lesbian encounters are considered under the purview of this POSH Act. So again that's again a myth buster कि नहीं ये सिर्फ लड़कों के लिए है, नहीं ये लड़कियां भी इसमें एक्यूज हो सकती है एंड ये एक्ट लड़कियों को भी पनिशमेंट कर सकता है. So here I am not speaking as a लड़कियों को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ या कुछ कर रही हूँ, but I am educating that this is useful for men also. It is not that it is suppressing men. तो अगर कोई मेन के अगेंस्ट, कोई मेल के अगेंस्ट कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट का कंप्लेंट आ जाता है, ऐसा नहीं है कि उसके पास कोई रास्ता बचा ही नहीं है, उसके पास बहुत सारे रास्ते हैं. डिफेमेशन जैसा केस अगर बन गया 499 एंड 500 ऑफ आईपीसी, आपका करियर का आप पूरा ये कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर उन्होंने आपके अगेंस्ट वो कंप्लेंट नहीं करा था देन आपका प्रमोशन हो सकता था, आपका सारा फ्यूचर अर्निंग्स आप कैलकुलेट करके वो डिफेमेशन अमाउंट बना सकते हो.
मान लीजिए आपका सैलरी 50,000 रुपीज होगी, तो 50,000 रुपीज में आपको टर्मिनेट कर दिया, ठीक है, आईसीसी कंप्लेंट में, या फिर आपको 2 साल के लिए, या जब तक हियरिंग ना होगी तब तक आपको सस्पेंड कर दिया, कुछ भी कर दिया, देन यू कैन क्लेम दैट अगर मेरा ये नहीं होता, ये मेरा HR फाइल्स में ये सारी चीजें नहीं होती, अगर मेरा रिकॉर्ड क्लियर होता, तो मुझे अगले साल तक 70,000 सैलरी होता, 80,000 सैलरी होता, ये मेरा एनुअल इनकम है, मुझे इतने का पैसा चाहिए, द कोर्ट विल अवॉर्ड दैट, ठीक है। अगर वो लेडी वो पैसा दे नहीं पाई फॉर फॉल्सली एक्यूजिंग हिम अंडर दैट डिफेमेशन केस, देन शी विल गो फॉर इक्वलेंट टर्म ऑफ द इम्प्रिजनमेंट। उसके पहले उनका कुछ प्रॉपर्टी का अप्रोप्रिएशन वगैरह होगा, अगर उसमें भी कुछ भी नहीं निकला, देन शी विल गो टू जेल, एंड एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी सर्व जस्टिस। आप फिर से सर उठा के अपने ऑफिस पर वापस जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि इट हैज टू बी only this way and आपके पास कोई रास्ता नहीं है। There is so much of way that a man can come out of this particular sexual harassment allegations or whatsoever। जितना rights female के पास है, उतना ही rights males के पास भी है। Yeah, so this is all about the POSH Act that I had to say। और दिस इज आई विल टेल यू दैट मैंने पॉश एक्ट की एक समंदर में से सिर्फ एक स्पून भर का इंफॉर्मेशन दिया है, बिकॉज दिस इज वेरी 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 वास्ट, और हमारे पास इतने सारे जजमेंट्स है, इतने सारे इंटरप्रिटेशंस है, इतने सारे अलग अलग केसेस है, एंड ऑल्सो दैट specific legislation along with the judgment। इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने जो भी जजमेंट्स दिया है, वन ऑफ द लेंथीएस्ट जजमेंट्स में आता है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। वो सारा गाइडलाइंस को फॉलो करना, ये सब। सो दिस इज जस्ट अ स्पूनफुल ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वास्ट ओशन ऑफ द पॉश एक्ट दैट आई कुड गिव इन दिस span of 1 hour। And if you have any questions, please feel free to ask me। I would love to answer to that of the how much ever I know। Thank you so much, madam, for the wonderful presentation on the topic POSH Act. Now I request dear participants, if you have any query, please come ahead and discuss with Advocate Krithika ma'am. You are welcome. Yes, sir, there is a question. Ma'am, in the case of a big company having small branch offices at different places where there are only 4 to 5 employees, is ICC compulsory at all branches? Like together they can make one ICC, that will be fine, because that will be that one full entity, right? So they should have it all together। की कंपनी का पेरोल में कितने लोग होंगे, अलग अलग ब्रांच तो अलग अलग है, लेकिन कंपनी तो एक ही है ना। I mean, ma'am, you have got the answer. Now I again request participants, please, if you have any query or would like to share something, please come ahead. Dear participants. प्रशांत सर, सवाल तो नहीं है, लेकिन एक बात बोलना चाहूंगा। मैम ने इतनी अच्छी जानकारियां शेयर की है साझा पॉश एक्ट का, पर तो मैंने कई बार यूट्यूब पर मैंने देखा है, और बहुत सारे लॉ से संबंधित अवेलेबल भी है। जब से ये डिजिटल दौर आया और हम लोग के पास बैठे बैठे हर चीज उपलब्ध है घर में। और इस बीच में दीदी मैं क्या बोलूं, आपने इतनी अच्छी बारीकी बातें बताई और एक एक पॉइंट्स को, व्यूज को आपने अच्छे तरीके से पॉश एक्ट के तहत में बताया। मैं तो मास मीडिया का छात्र हूं और आप लॉ से रिलेटेड हैं, तो मैं तो समझता हूं कि दोनों के लिए काफी ज्यादा चुनौती तो हर जगह है, मगर हम दोनों के लिए काफी चुनौती है, क्योंकि आप एडवोकेट हैं और मैं पत्रकारिता क्षेत्र से हूं, तो मुझे जानकारी होनी चाहिए। आपने एक महत्वपूर्ण जानकारी बिंदुओं को आपने साझा किया, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। मैं पटना बिहार से जुड़ा हुआ हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। So thank you, Sudhir Kumar sir, Kulkarni sir, and Sonu Kumar sir. Now I request the chief organizer of the series, Honorable Principal M. B.A.L.L.B sir. Sir, please come ahead and have some words for today's session. Please welcome.
Sir, we can have an external member as the presiding officer. Need not. Yeah, then even that case, we can have the external women as the presiding officer. All members will be external women. My pleasure, sir. Thank you, sir. Thank you so much for inviting me for the session and making me part of this prestigious world record series. एक बात मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि धन्यवाद के बाद भी कुछ बोलने के लिए नहीं रह जाता है। मैं ये कोई रिक्वेस्ट करूंगा दीदी कि अगर कभी भी बेटकर सर से अगर आपको कोई ऐसा मतलब लगे कि कोई ऐसा विषय जो पब्लिक हित में जनहित में जानकारी होनी चाहिए, और आप एक बार बेटकर सर के पास अगर अवश्य बोले, ताकि ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप आकर उस बातों को रख सकें, जिसके माध्यम से हम लोग इसे शेयर भी करेंगे। क्योंकि आपने जो बातें बताई उससे, क्योंकि देखिए आपका रिसर्च का अपना एक जगह है और मेरा अपना एक जगह है, मगर जब बातें जब दो तरफा जब होती है तो बहुत सारी बातें सामने आती है। जैसे कि कुछ व्यूज ऐसे थे जो मैंने कभी सुने नहीं थे, मेरे जहन में भी नहीं था, और वो यूट्यूब पर मैंने देखा भी नहीं था, मगर आपने जब डीपली कुछ बातों को रखा, इस इतने 1 घंटा इसके लिए कम है। जो आप बातें बता रही हो वो भी कम है, क्योंकि सर ने भी क्वेश्चन किया, ये घंटा बहुत कम है और इस 1 घंटे में आपको बातें रखनी थी। तो मैं क्या कहूँ आपके, अगर आप कभी भी हो दीदी तो आप बिल्कुल एक बार सर के पास सूचित करें और आप आए, सुनना चाहिए। बिल्कुल श्योर। जैसे मैंने आपको बोला कि पॉश एक बहुत बड़ा समंदर है, उसमें मैंने जितना भी 1 घंटे में बोला है ना, दैट्स जस्ट एक चम्मच जितना है। चम्मच में एक समंदर में पानी लोगे तो कितना ही आएगा, बस उतना इन्फॉर्मेशन ही मैंने दिया है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसी चीजें हैं पॉश में जो हमें बहुत पढ़ने का, हर दिन जब मैं कुछ पढ़ती हूँ तो लगता है अरे ये तो नया है। तो yeah, that is there. Surely I'll get connected with you. Surely. Yeah. Sir, thank you very much for giving me this opportunity to speak. Because of some internet disturbance, I could not join in between. Madam, thank you very much. Wonderful presentation. You are very expressive, and the points, whatever you are discussing, we have received it very completely. And there are different facets also in this subject. It is not just one aspect that it is just against for the females can fight with this act. No. So it is means it is for everyone. That is what I learned first point. That is also very great. Many of the times the complaint comes, we are having internal grievance committee, ICC we are having, and then Vishakha is also we are having, and we are putting all those kinds of complaints. But many of the times, the people are not making daring to come to this. Even we are putting all the boards and the phone numbers and everything we have placed. But if suppose some means it is not just something a big crime, but a passing comments on girl, that is also not a great thing. So that girl should approach, that approachable aspect is somewhere missing, and even committees feels better that no complaints are coming and arising in front of us. So they are also happy, and they are very important. You said that record has to be maintained. So the meetings are conducted, and the things are written, and no problem has been identified, and nothing has been happened. But many things are happening in one single day also. So what do you think about how to make it more approachable? Because the law is astringent, law is great, but the thing is, the people who are victims, they cannot, they are not reaching. There may be some kind of fear, maybe some kind of social stigma, what people will say, and that is why I think they are not approaching. So, how to generate that kind of, motivation among those people. Thank you. Yeah, sure, sir. As I said, like being a female, I can really relate to that. And I have seen people also, they are having an apprehension that if we tell this in home, tomorrow, what if they tell that you don't go to work? Tomorrow, what if they tell that you don't meet your colleagues? Tomorrow, what if they start doubting on me? Tomorrow, what if they tell that even if I'm 5 minutes late from office, they'll be like, where did you go?
who did what to you, किसने क्या किया, किसके साथ घूमने गई थी. So all these questions will come up. So I think that is what's stopping females from giving the complaint, that how will my family members react, because nobody would like to lose their financial independency. अगर आज मुझसे भी बोल दिया जाए कि तुम कुछ भी मत करो, तुम ऐसे ही घर में बैठ जाओ, सिर्फ खाना वाना देखते रहो, तुम नौकरी मत करो, मुझे भी वो अच्छा नहीं लगेगा. चाहे मुझे ऐसे बैठा बैठा के 2 करोड़ रुपए दे देते, even then I will not be happier with that. So I think more than एम्पावरिंग वुमेन, उनको प्रोत्साहन देने के साथ साथ हमें मेल्स को भी ये बात बतानी है कि इट इज नॉट अ बिग थिंग, कि अगर आपके घर में कोई महिला आवाज उठा रही है कि मेरे साथ ये हो रहा है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है. इसका सोल्यूशन ये भी नहीं है कि आप उसको घर में बिठा के रख दो, उसको नौकरी छुड़वा दो, बिकॉज दिस इज व्हाट हैपेंस इन ऑलमोस्ट ऑल द हाउस होल्डिंग, कि अरे मत जाओ बाबा, क्यों जाना है, क्यों इतना बाहर जाना है, ये करना है, वो करना है. Everybody does that. That is the first reaction a family member can give. आप अगर उसको बैंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में भी देख लो, या फिर किसी गांव में जाके भी देख लो, मैं फैमिली मेंबर्स का माइंडसेट ही वही है. When I say family members, I am not just telling men, I am even telling female also. Including, see, when I decided that I'm going to study law, my mother was totally opposite to that. She is like, no, नहीं, ये लड़कियों की नहीं है, तुम्हें लेट ऑफिस में बैठना पड़ेगा, एडवोकेट ऑफिस में, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा. So even my own mom was against it. So it is, wherein my father was supportive, was like, okay, chalo beta, karo, तुम कर सकती हो, करो. But my mom was against it. So I think we have to empower those people also. इट इज नॉट जस्ट दैट वुमेन. कई बार क्या होता है, वुमेन को करना होता है कि मैं कंप्लेंट करूंगी, लेकिन उसको जो रोकता है ना, वो ये डर रोकता है कि मैं जाऊं तो कैसे जाऊं, मेरे घर वाले कैसे रिएक्ट करेंगे. उसके पास सारा प्रूफ होते हुए भी वो किसी से शेयर नहीं कर पाती है. आई थिंक वी हैव टू गिव दैट फ्रीडम एंड वी हैव टू स्टार्ट दैट थिंग इन आवर होम. ओनली देन I think we will be able to see the changes and women coming up and raising voice. And also the same thing happens with male also. अगर कोई male sexually harass हो रहा है किसी से, तो वो भी बोलने से खिचखिचाता है, वो भी बोलने से डरता है कि बाकी के मेरे सारे मेल कलीग्स मुझे कैसे जज करेंगे कि ये क्या है यार, लड़का होके तू सेक्सुअल हैरेसमेंट का कंप्लेंट कर रहा है. दैट माइंडसेट वी हैव टू इरेज. ओनली देन द लॉ विल बी totally in use and totally in force. So this is what I opine out of my experiences and whatever I have seen. Yeah, thank you, ma'am. One case came in front of our committee, and we found that one girl was complaining about the boy, that he has harassed and even troubled and this and that. And when we started exploring the story, we got to know that boy was innocent, and the girl made the problem with the boy. That is also. I have seen that I think that was the first complaint that I heard as an external member of ICC, and it was like that they were in consensual relationship, and then when her there was some dispute, she filed a complaint. Thank you, sir. नमस्ते सभी को. नमस्ते मैडम, मेरा एक सवाल है कि हमारा जो कानून है, यानी हमारी जो व्यवस्था है, वो एक लंबी प्रक्रिया के बीच में से गुजरती है. जैसे एक लड़की अगर गांव में रहती है तो उसके सबसे नज़दीक पुलिस होती है, क्योंकि अगर देखें तो सबसे पहले पुलिस ही आती है, बाकी कोई व्यवस्था नहीं है कि हम कहाँ शिकायत करें. लेकिन पुलिस इन चीज़ों को समझाकर वापस कर देती है. तो फिर उसके बाद में शायद जहाँ तक मैं जानता हूँ SDM रहता है. तो SDM में पूरे तहसील का एक हेड रहता है, तो वहाँ तक जाना मुश्किल होता है. तो क्या कोई ऐसी प्रक्रिया है जिससे मतलब वो ऑनलाइन माध्यम से या जो उसे एक्सेप्ट किया जा सके, ऐसी प्रक्रिया शुरू हुई है कुछ? हाँ सर, अभी जो अगर FIR रजिस्टर करना हो तो अभी सारे स्टेट में आपको FIR मिल जाएगा, जहां पर आप ऑनलाइन ही FIR रजिस्टर कर सकते हैं. आपको जैसे बहुत सारे पोर्टल है, जैसे उत्तर प्रदेश में आपको जन सुविधा है, बैंगलोर में भी आपको ऐसा एक पोर्टल है माई गवर्नमेंट करके, जहां पर आप
उनको कंप्लेंट कर सकते हैं कि देखो मेरे साथ ये हो रहा है और पुलिस वाले मुझे सुन नहीं रहे हैं। और आपके पास ये भी है CM पोर्टल, PM पोर्टल, और आपके पास नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, स्टेट कमीशन ऑफ वुमेन, और उसके बाद बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस है जो आपके लिए यहाँ पर वॉइस आउट कर सकती है, जिसको आप सिर्फ एक ईमेल के मुखेना या फिर वहां पर कंप्लेंट रजिस्टर करके आप उनको कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप स्पेसिफिकली सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात करो तो हमारे पास साइबर पुलिस का सेल है जो गवर्नमेंट वेबसाइट है, वहां पर भी आप वहां पर भी आप ऑनलाइन सेक्सुअल हैरेसमेंट का कंप्लेंट दे सकते हैं। एंड वहां पर भी आपके पास ऑप्शन है कि आपको अपना नाम डिस्क्लोज करना है या नहीं करना है। एंड अगर कोई पुलिस आपका FIR रजिस्टर कर भी नहीं रही है, देन आपके पास जो भी है उनका नंबर, फोन नंबर, DSP हो, SP हो, उन सबका आपको ईमेल ID भी मिलता है। आजकल हर सरकार का है पोर्टल पे, तो आप वहां पर ले सकते हो, उनको ईमेल भेज सकते हो, उनको फोन कर सकते हो डायरेक्टली। आपके किसी भी स्टेट में भी हो, आप अपने CM को लिख सकते हो। तो ईमेल में बहुत रेस्पॉन्स आता है एंड PM पोर्टल भी बहुत अच्छा काम कर रहा है बिकॉज ऑफ द डिजिटलाइजेशन। आपको बिल्कुल 200% आपको वहां से रिप्लाई मिलेगी सर। अगर आपकी पुलिस सुन नहीं रही है देन आपको बिल्कुल वहां से रिप्लाई मिलेगी। मैडम ये कि जैसे FIR हो गई तो जिसने FIR की तो उसको अपना बयान देने के लिए मतलब कहाँ पर जाना होगा और उसको कहाँ पर बुलाएंगे लोग? पुलिस स्टेशन में ही बुलाएंगे सर, जो जुरिस्डिक्शनल पुलिस स्टेशन होगा वहां पर बुलाएंगे और वहां जाके बयान देना होगा। धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू। So thank you so much, sir. I think there is nobody now to ask question because Madam have explained it very clearly. So now I move towards the vote of thanks. Shri Kumarswami Mahavidyalaya Ausa, District Latur. As we know, organized World Record Series 2. Today we have completed 243rd day of the series, and the keynote speaker for today's session was on the dais Honorable Advocate Krithika Madam, who talked upon the topic POSH Act. Basically, this act came into existence in the year of 2013, I think so, where sexual harassment of women at workplace, how to prevent, how to prohibit. Now, so only because of this act came into existence. Ma'am have explained it very sincerely, clearly in a simple language. What is the POSH Act? Then the elements of POSH Acts. What is the time to limit for the POSH Act and where to file the complaints? And also have highlighted upon the different cases, Vishaka versus Rajasthan, then the local companies committees, as well as the Shalinis Ahuja's versus Kangana's case. So these points have covered in your lecture sincerely, madam. Really, it was very informative session for us, informative and knowledgeable for us, everyone. So thank you so much on behalf of the organizing committee members. I thank the chief organizer of the series, Honorable Principal M.M. Bechkar sir. Thanks the colleagues from my college, Dr. Sanjay Kale sir, Anita Dole madam, Honorable Dr. Ken Kadam sir, Praveen Udge sir, and all others. Special thanks to Sudhir Kulkarni sir, Sonu Kumar sir, Dr. Swanand Shukla sir, Devir Singh sir, who always join the series and ask nice questions. So thanks to you, and heartily thanks all those dear participants, those who join in the series on time regularly, also encourages us and enhance the beauty of the series. So thanks to you all once again. With the kind permission of the chief organizer, I declare today's session is over, but not to miss to fill the feedback link which is given in the chat box. So thank you once again, Krithika madam, for the wonderful presentation. Thank you, sir. Thank you so much for providing me this opportunity and asking the questions, which made me feel that yes, it was good, and
I could convey something. Thank you, sir. Thank you so much. Okay. Yeah. Thank you, sir. Thank you so much.